Okay, perfect. So let's begin. So, we are in the third session today और आज का टॉपिक है फाइनलाइजेशन प्रोसेस एंड अकाउंटिंग फॉर कॉर्पस फंड्स। ये कॉर्पस फंड काफ़ी पेक्यूलर है नॉन प्रॉफिट्स को। एंड सेशन टू में हमने फाइनलाइजेशन के थोड़े एस्पेक्ट्स स्टार्ट किए थे, फाइनलाइजेशन एडजस्टमेंट्स। So today we are going to cover the other part of finalization, which is from trial balance. So this is the flow basically that we had discussed last time also, कि अकाउंटिंग से लेकर फाइनलाइजेशन तक, उसके बाद ऑडिट और अप्रूवल बाय बोर्ड, दिस इज द प्रोसेस फ्लो। तो आज हम फोकस करेंगे जनरेटिंग ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट leg of the entire process. Okay, so yeah, so first let's begin with what is trial balance. कोई बता पाएगा व्हाट ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? हम सबने सुना रहेगा। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, क्यों, क्या जरूरत है ट्रायल बैलेंस की? कैन somebody just unmute and share? इफ यू वांट आप लिख भी सकते हो। एनीवन? It is a balancing of all the ledgers accounts. Since we परफेक्ट। follow the double entry process, so all the ledgers are, we see that it एब्सोल्युटली is a balancing out. right, absolutely, yes, it is a statement of all ledger account balances, both debit and credit, on a particular date. ओके, आप अकाउंट्स बनाते हो तो कौन से भी डेट पे आप ट्रायल बैलेंस निकाल सकते हो, उस दिन के आपके लेजर अकाउंट के बैलेंसेस आपको दिख जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। So typical features, key features of trial balance are it ensures total debits equals total credits, जो हमने की कॉन्सेप्ट्स में देखा था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे टोटल डेबिट्स विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स इन अकाउंटिंग। तो ट्रायल बैलेंस इंश्योर्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर पोस्टिंग, क्योंकि अगर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट तो अरिथमेटिकली इतना तो कंफर्म हो जाता है कि सब सही है। ओके, सो ट्रायल बैलेंस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन दैट काइंड ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। Okay, trial balance also helps us detect some errors, though not all types of errors. We will talk about these errors little bit in detail in the subsequent slides. Okay, trial balance is also the base document based on which हम हमारा income and expenditure statement और balance sheet बनाते हैं. Okay, this is the base document because this is the closing. Trial balance only appears once all the ledger accounts are closed and balances are obtained from all the ledger balances. ठीक है? Uh, yeah, so this is what trial balance is. So since we are talking about trial balance, हमको types of errors भी जानने चाहिए कि what are the types of errors that exist ordinarily. Sorry, I just clicked the next slide, but yeah, these are the tip. I wanted to ask question who all are aware of the four types of errors. Um but ordinarily, yeah, these are the four types of errors: errors of principle, error of commission, एक होता है compensating error, एक होता है errors of omission. Can has anybody heard about these errors previously? कोई बता पाएगा कि आपको क्या आप क्या जानते हो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन या कॉम्पेंसेटिंग एरर, या इसमें से किसी एक एरर के बारे में आपने कुछ जाना रहेगा? कैन यू शेयर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज एरर्स? किसी ने फेस किया है सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर्स प्रॉब्ली डिटरमाइन करने के लिए बिफोर बिफोर द ऑडिट? टिपिकली जब भी ऑडिट होता है उसके पहले हम हमारे बुक्स क्लोज करते हैं, कोई एरर्स रेक्टिफिकेशन होता है वो करके ही हम ऑडिट डेटा आगे भेजते हैं ऑडिटर्स को। तो हम रिजॉल्व तो कर लेते हैं काफी टाइम, बट नो अभी अभी एबल टू क्लासिफाई कि कौन सा एरर कौन से टाइप का है? This is little bit theory, but for all of us to understand that certain type of errors exist in accounting. कैन एनीबडी जस्ट ब्रीफली शेयर, अगर सब नहीं आते तो किसी एक एरर का भी बारे में आपको कुछ पता है, आप बता सकते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? Error of principle is suppose treating capital as revenue and revenue as capital. राइट, राइट, परफेक्ट, यस यस। एनीबडी एल्स? कंपनसेटिव एरर। यस। क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है?
एक डेबिट की एक डेबिट हो जाता है एक्सपेंसेस, उसके अगेंस्ट सेम अमाउंट अगर क्रेडिट हो जाता है तो उसको देखने ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है, करेक्ट करेक्ट, या कंपल्सिव हो जाता है। एंड श्योर, एरर्स ऑफ ओमिशन, तो मतलब कोई एंट्री हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो राइट, वो चीज़। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, या एनीबडी नोज एरर ऑफ कमीशन? एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? तीन एरर की जो बात हो गई है। ओके, लेट्स सी each of the errors. Okay, so like Anurag said, error of principle basically violates the fundamental accounting principles. In simple language, जो भी हमने अब तक पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स, जो नो सेशन 1 सेशन 2 में कवर किए हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग अजम्पशंस, अगर वो फंडामेंटली वायलेट हो रहे हैं, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर्स जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं टिपिकली, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का हमको सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी समझती है थ्रू ट्रायल बैलेंस। व्हेन ट्रायल बैलेंस मैचेस, इफ डेबिट्स इक्वल टू क्रेडिट्स, अरिथमेटिकली सब सही है, लेकिन अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया गया हो, वो हमको ट्रायल बैलेंस से नहीं समझेगा। सो दीज टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अगेन हमने सेशन 2 में भी देखा कि रिस्ट्रिक्टेड ग्रांट्स जो होते हैं, उसको अगर हम इनकम ट्रीट करें इंस्टेड ऑफ अ लायबिलिटी, अगेन ये एरर हमको ट्रायल बैलेंस देख के नहीं समझेगा, बिकॉज दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपली समथिंग हैज गॉन रॉन्ग इन द वे इन विच अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैज बीन डन। ओके, these are the examples of errors of principle. Second is error of commission, which is कुछ क्लरिकल मिस्टेक होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल और पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट। दीज एरर्स आर टिपिकली एरर्स ऑफ कमीशन। ओके, यहाँ पे ट्रांजैक्शन इनकरेक्टली रिकॉर्ड होती है, ओके, बट मे बी विद इन द सेम अकाउंट, मे बी विद इन द सेम अकाउंट टाइप और ग्रुप ऑफ अकाउंट, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन गलत, कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो कि एक लेजर की जगह दूसरे लेजर में गलती से पोस्ट हुआ हो, so these are typically errors of commission. Example, maybe wrong amount is posted or wrong posting is done in ledger, or maybe there is some arithmetical mistake. सैलरी, जैसे सैलरी 25,000 की हो लेकिन रिकॉर्ड करते समय 52,000 का रिकॉर्ड हुआ हो, या डोनेशन रिसीव हुआ हो मिस्टर एक्स से, लेकिन क्रेडिट हुआ है मिस्टर वाई के अकाउंट में। दीज आर टिपिकल टाइप एग्जांपल्स ऑफ एरर्स ऑफ कमीशन। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, देन कम्स कॉम्पेंसेटिंग एरर। ओके, जैसे आई थिंक राजीव ने बताया कि जब ये दो एरर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, उसको कॉम्पेंसेटिंग एरर्स बोलते हैं। ये एरर्स भी काफ़ी डिफिकल्ट है समझ ट्रायल बैलेंस से फिगर आउट करने के लिए। ओके, ट्रायल बैलेंस आपका स्टिल मैच होगा, आपने अगर दो एरर्स हुए हैं और एक दूसरे को कट आउट कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच होना ही है, आपको ये फिगर आउट नहीं होगा जस्ट लुकिंग एट ट्रायल बैलेंस। यू विल हैव टू इन्वेस्टिगेट एंड scrutinize each and every ledger account to really find out such kind of errors that are happened in your books of accounts. Okay, in simple terms, one mistake offsets the another mistake. This is compensating error. टिपिकल एग्जाम्पल यह है यहाँ पे ऐसे कि इक्वल ओवर स्टेटमेंट हुआ हो, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस ओवरस्टेट बाय से 10,000 रुपीज, डेबिट हमने एक्स्ट्रा दिया हो सैलरी बुक करते समय, लेकिन उसके अगेंस्ट प्रिंटिंग एक्सपेंस जब भी बुक कर रहे थे उसको हमने अंडरस्टेट किया हो 10,000 रुपीज में एग्जाम्पल। तो एक जगह 10,000 रुपीज बढ़ गए डेबिट में, दूसरी दूसरी जगह दूसरे ट्रांजैक्शन में 10,000 कम रिकॉर्ड किया हो, तो दोनों को ये कॉम्पेंसेट कर दिया है। तो ये कभी हम फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे लुकिंग एट द ट्रायल बैलेंस। ओके, दीज आर कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। देन कम्स एरर ऑफ ओमिशन। दिस इज अ सिंपल टू अंडरस्टैंड कि कोई ट्रांजैक्शन ही कंप्लीटली मिस आउट हुआ हो फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द फर्स्ट प्लेस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, इसका कुछ डेबिट भी नहीं दिया हो, क्रेडिट भी नहीं दिया हो, टोटली जैसे परचेज इनवॉइस आया, आपसे स्किप ही हो गया है बिकॉज ऑफ वीक इंटरनल कंट्रोल्स, वो इनवॉइस कभी रिकॉर्ड हो नहीं पाया आपके टैली में। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ ओमिशन। या फिर कोई ट्रेनिंग फी, अपने अगर ट्रेनिंग किसी को दी है, इनवॉइस रेस किया हो लेकिन बुक नहीं किया हो, एग्जाम्पल,
even this is a typical example of error of omission जो completely skip हुआ. Okay, these are the four types of errors uh, which are important for all of us to understand when we talk about trial balance. इसमें से कोई errors आपको ट्रायल बैलेंस देख के समझ सकते हो आप, या और कोई एरर्स ऐसे है कि आपको ट्रायल बैलेंस देख के नहीं समझेंगे, आपको उसको इन्वेस्टिगेट ही करना पड़ेगा, आपको हर एक लेजर जाके स्क्रूटिनाइज करके ही आपको एरर्स समझ पाएंगे. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस, देयर इज आल्सो दिस account that typically we use, no, called as suspense account. Can somebody tell me what is suspense account and why do we use it? क्या होता है ये सस्पेंस अकाउंट? हम मैं सभी ने बताऊं? कभी ना कभी तो यूज किया रहेगा ये सस्पेंस यस अकाउंट. यस, जो हम लोगों को पता नहीं रहता है कि एग्जैक्ट वो जो खर्चा है वो किस हेड में जाना चाहिए, तब हम लोग सस्पेंस पे रखते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिसाइड इन विच हेड वी आर गोइंग टू पुट इट एंड द रिजल्ट. करेक्ट करेक्ट, या सो इट्स अ टेम्पररी अकाउंट जो आपने अभी एक्सप्लेन किया. इट्स अ टेम्पररी अकाउंट बेसिकली टू टू park certain no amounts in a ledger till the time we figure out कि उसका करेक्ट अकाउंट कहाँ पे है. ओके, so typically when a trial balance does not match, जो डिफरेंस रहता है हम टेम्परेली प्लेस करते हैं सस्पेंस अकाउंट में टू प्रोसीड विथ फाइनल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड व्हेन वी फिगर आउट सब्सिक्वेंटली कि वो अकाउंट कहाँ पे जाना चाहिए, और हाउ डू वी rightly place the transaction in the right ledger, that time we clear such suspense accounts. की फीचर्स ऐसे होते हैं कि इसके suspense account gets closed once errors are identified and rectified. It can either be debit or credit depending on the difference. Important to understand, suspense account cannot go in our final audited accounts. Okay, सस्पेंस अकाउंट्स होना ये इंडिकेट करता है कोई एरर हुआ हो, या नो कुछ ट्रांजैक्शन कंप्लीटनेस में रिकॉर्ड नहीं किया है. बट इससे हमको ये नहीं समझा कि वो एरर का टाइप क्या है. That information we will not come to know unless we investigate. So this is kind of, whenever auditors ask for our data, जब भी हम डेटा भेजते हैं हमारा टैली का, first thing that they say is that you need to clear all the suspense accounts, because that information only the accounts team internally at each of the NPOs will have to investigate, deep dive, and resolve before even the audit can begin. Okay, so like we discussed, suspense account is just a temporary ledger account used to balance the trial balance and for us to move ahead so that finalization can happen to certain extent subject to resolution of suspense account. Okay, हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए हम एक टेम्पररी अकाउंट बना सकते हैं इन आवर अकाउंट्स. ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन विथ मी सो फार? किसी को कोई This क्वेश्चंस was हैं? mostly used when accounts were manual. Uh, yeah, so no, even today this can get used. Are you saying that this was mostly used when the accounts were manual and not now? Yes. Okay. देखो अभी भी यूजुअली होता है, व्हेन लाइक रश्मि सेड, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता है, नो वी कैन टेम्परेरी पार्क दैट ट्रांजैक्शन एज अ सस्पेंस अकाउंट सो दैट इट बिकम्स एन इंटरनल कंट्रोल फॉर अस एज वेल कि इसको रिजॉल्व करना है सब्सिक्वेंटली, रादर देन नॉट बुकिंग एनीथिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन. That is true, but at least we know one side of the problem, ki what the nature of that is, right? या Because debit and credit is available. So know what is the nature of that account. We may park it as suspense, but we'll know ki whether it is a real account or it is a nominal account, or what type of account it is. But करेक्ट when करेक्ट, accounts were kept manually, which I have seen, right? राइट. So at that time, while telling the trial balance, we used to find हम्म, that trial balance are not tallying. गॉट And इट. then we used to put the suspense account to tally it and then look for the Right. errors. Right, right. Absolutely. Yeah, yeah. So yeah, it started from there, and now that we are using, all these softwares, maybe the usage has changed a bit, but yeah, I get what you're trying to call out. Absolutely. Sure. Anyone else? किसी के और questions है?
Okay, let's look at sample trial balance कैसे दिखता है. Okay, so this is just an example of a trial balance जहाँ पे if you see at the end, uh, the total of debit here matches total of credit. So trial balance ऐसे ही आपको दिखेगा, it will always match, but this will not really no indicate कि ये हमारे बुक्स एरर फ्री है completely. ओके इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करके स्क्रूटिनाइज करके ही आपको समझना पड़ेगा कि सारे बुक्स जो क्लोज किए हैं वेदर दे आर एक्यूरेटली डन. So in the process of finalization, हम before we prepare income and expenditure और बैलेंस शीट, पहले हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है. ओके ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स ऑल असेट्स लायबिलिटीज ऑल अवर इनकम लेजर्स एक्सपेंस लेजर्स. Income and liability accounts appear on the credit side, and expense and asset accounts appear on the debit side of the trial balance. So once trial balance is prepared, and before we move on to preparing income and expenditure and balance sheet, it is important for all of us to identify कि कौन सा ledger balance is revenue or capital in nature and what is asset and liability. Okay, once we identify or classify each of the ledger accounts into revenue, capital, asset, liability, only then we will be able to report them in the right format in our income and expenditure and balance sheet. Like example, if you see each of the ledger accounts here, cash in bank, first you need to classify whether what is this. This is an asset. Bank balance is an asset. Trading fee receivable, you need to classify as an asset. No advances to staff, fixed asset हो गया, investments, all these ledger accounts are assets. Okay, then there comes salary expenses, rent expense, program expenses, administrative expenses. All these are revenue expenditure. Then there is outstanding expense, training fees, advance. Okay, sundry creditors हो गए, reserve and sundry. So these are typical examples of liabilities. Reserve and surplus forms part of trust fund. Okay, on the liability side, सबसे ऊपर दिखता है बैलेंस शीट में. And then there is revenue income like grant income, donation income, interest income. Once you have classified all the ledger balances into asset, liability, revenue, income, revenue, expense, then as per the format of our financial statements, you need to see where each of the ledger accounts will go. जैसे cash in hand will get reported in the current asset side of your balance sheet. So इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जैसे अगर आप सेक्शन 8 कंपनीज हो तो सेक्शन 8 कंपनीज के लिए एक फॉर्मेट है अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. आपको फॉर्मेट फॉलो करना है. आप अगर चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जैसे महाराष्ट्र में अंडर महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, तो चैरिटी कमिश्नर का एक अलग फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर का. तो आपको फॉर्मेट देख के आपको क्लासिफाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच लेजर अकाउंट balance will get reported under which head in the financial statements. Okay, so in this example हमने कंपनी एक्ट के हिसाब से ये ट्राई किया है बनाने के लिए. So in that cash in hand, bank balance, receivables, advances, all this get classified as current assets. Okay, uh, so current asset, I think somebody had asked this question also in the previous session. So current assets are nothing but those assets that are expected to be converted into cash within 12 months. I mean, this is the easy way to uh, understand what is current asset. और नॉन करंट असेट्स वो होते हैं जो expected to be converted to cash beyond 12 months. Okay, this is just a simple way to understand the difference between current and non-current. Okay, जैसे फिक्स्ड assets हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, these are not expected to be converted to cash immediately or beyond, or within 6 months, within 12 months. Hence these are classified as non-current assets. Okay, फिर हो गए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने देखे थे. These will get reported in your income and expenditure on the direct expense head in your income and expenditure debit side, expenditure side. फिर है ये लाइबिलिटी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग फीस, एडवांस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सब क्लासीफाई होंगे करंट लाइबिलिटीज में. रिजर्व एंड सरप्लस, लाइक आई सेड, इट विल गेट क्लासिफाइड एज अ ट्रस्ट फंड.
And then there is income, which is revenue income, which will get reported as your direct income, because grant income, donation income, interest income, all are kind of direct income for a non-profit. तो जब ये क्लासिफिकेशन पूरा होता है फ्रॉम योर ट्रायल बैलेंस, दैट टाइम यू विल बी एबल, ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू राइटली place each of the ledger balances in your financial statements under the right head. Okay, is this clear? इसी में इसमें किसी को डाउट है कुछ? Anybody has any questions? No. Okay, perfect. So I'll move on to the flow now, that once we have classified all the ledger balances, now how do we move from trial balance to financial statements? Is that, like we discussed, first classify into, this is just a flow chart that has been prepared just to summarize what we have discussed so far. Trial balance से first classify होता है revenue and capital, asset liability. उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करते हैं, रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं इन अंडर ईच ऑफ द नो ईच अंडर ईच ऑफ द स्टेटमेंट, लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. इनकम एक्सपेंडिचर बनने के बाद जो बैलेंस रहता है एट द एंड, इधर इट कुड बी इधर सरप्लस और डेफिसिट, दैट गेट्स ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस इन आवर बैलेंस शीट, एंड ओनली देन वी प्रिपेयर balance sheet. I mean, this is the flow in which we prepare our financial statements. Trial balance, classification, then we prepare income and expenditure. फिर जो बैलेंस होता है इनकम एक्सपेंडिचर का, इधर इट कुड बी इधर सरप्लस और डेफिसिट, गेट्स ट्रांसफर टू बैलेंस शीट अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, एंड देन वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट. ओके, नाउ दैट वी हैव स्पोकन अबाउट ट्रायल बैलेंस, एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी समझ लेते हैं. इवन दिस पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कैन एनीबडी शेयर व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन सिंपल इन लेमैन्स टर्म? इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है? यू नीड नॉट बी टेक्निकली राइट, जस्ट वॉट एवर यू नो. इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट हम जो बनाते हैं, उससे हमको व्हाई डू वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट? हेलो सर, यस, दिस साइड विजेंद्र. यस सर विजय. एक्चुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के पीछे जो लॉजिकली है कि व्हाट वी रिसीव इन द होल द ईयर एंड व्हाट वी रिकॉर्डेड, व्हाट वी एक्सपेंड और स्पेंड इन होल द ईयर. सो फाइनली वी कैन कंक्लूड कि ऑल पूरे साल में हमने कितना दिया, कितना लिया, फाइनली हमारे पास है क्या, जिससे कि राइट. हम उस ट्रांजेक्शन के बेस पे आगे का फ्यूचर प्लानिंग और बैलेंस शीट तक जा सके. ओके, अगर सिंपल शब्द में कहे तो आया और कितना गया और अभी कितना आपके पास है, दैट ओके, इज द इनकम एक्सपेंडिचर सर, अकॉर्डिंग टू मी. मे बी गॉट इट, मैं गॉट आई इट. रोट रॉन्ग और राइट. No, perfect, perfect. I think thank you for that explanation. So basically, this statement helps a non-profit to understand the operational performance for a year. Okay, income expenditure statement shows whether the NPO has operated with a surplus or deficit towards the end. तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जानने के लिए हमको इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाना होता है in simple, technical terms. Key features to understand about income and expenditure statement: it includes all the revenue items only, no capital items. Okay, fixed asset, investments, nothing gets recorded under income and expenditure. Only revenue items are recorded under income and expenditure. Okay, income and expenditure shows income on the credit side and expenses on the debit side. एंड में हमको सरप्लस या डेफिसिट calculation no, for a non-profit, this becomes important कि during the year what is the surplus that gets generated or deficit that we are in, and not profit or loss. For profit organizations में हम profit and loss statement बनाते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट्स के लिए इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. इसमें in tally lot of times I've seen at smaller organizations, typically कि people still continue preparing प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. जब भी हम बुक भी करते हैं तो P&L बनाते हैं,
But for a non-profit, it is not P&L, but the right statement is income and expenditure that needs to be prepared. क्योंकि the intent of a non-profit is not to generate profits. कुछ excess income होता है तो we call it as surplus and not profits. Likewise, अगर कोई ज़्यादा खर्चा होता है during the year, it is not a loss for the non-profit. It is a deficit that a non-profit is into, which will get taken care of by maybe past accumulated funds or reserves and general funds that have been accumulated by the non-profit. Okay, income and expenditure does not show any assets or liabilities. Okay, format of income and expenditure should be as per the governing laws जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है. जैसे कंपनी लॉ में भी अलग से एक फॉर्मेट है दैट यू विल हैव टू फॉलो फॉर सेक्शन 8 कंपनीज. एंड स्टेट स्पेसिफिक जो चैरिटी कमिश्नर के अंडर जो रजिस्टर्ड है, there is also like separate formats under each of the states wherever there is a state specific law. Okay, this is just a sample income and expenditure statement that we have taken from the Maharashtra Public Trust Act. जिसमें if you see no, there is income side on the right hand side जहाँ पे सारे incomes for the non-profit gets registered, gets recorded, and then there is expenditure on the left hand side. ओके, इसमें एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय ट्रस्ट एंड देन एक्सपेंडिचर ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट. ऐसे अलग से फॉर्मेट में चैरिटी कमिश्नर यहाँ पे मांगते हैं महाराष्ट्र में. सो दैट्स वाई वी हैव टू आइडेंटिफाई each of the ledger balances from trial balance. Where will they get recorded in this format of the governing law that a non-profit is governed by? Okay, एंड में जो बचता है अगर डेबिट साइड में नो बैलेंस है, दैट इज typically the excess of income over expenditure, this is surplus. और अगर right hand side में बचता है तो that is deficit in the income and expenditure statement. Anurag, you have put a comment, receipts and payments. Yes, we will discuss about receipts and payments also in the subsequent slide. Okay. Yeah. Okay. So this is income and expenditure. सो लाइक विजेंद्र जी ने बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई बता पाएगा कि बैलेंस शीट क्या होती है? लाइक व्हाट इज बैलेंस शीट एंड व्हाई डज अ नॉन प्रॉफिट नीड टू हैव अ बैलेंस शीट? Whatever you guys understand, right, wrong is okay. सर मैं आई Yes, yes, विजेंद्र जी बोलिए. बैलेंस शीट सर अगर देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी संस्था का वो एक दर्पण होता है जो कि उससे संबंधित होने वाले व्यवसाय या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अ, एक रूप में ला के सामने खड़ा करता है, जिसके बेस पे उसकी इमेज, उसकी रेपुटेशन, उसकी छवि या वो कितना अच्छा है, इमेज है उसका, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में लाके हमारे सामने प्रस्तुत करता है. तो हिंदी में हम देखें तो ये एक सिंपल परिभाषा है जिसको हम बैलेंस शीट कह सकते हैं. एंड अगर इफ वी वांट टू इन टेक्निकल लैंग्वेज, सो व्हाट आर द एसेट्स वी हैव अवेलेबल एंड Right, व्हाट काइंड्स ऑफ द लाइबिलिटीज वी आर अवेलेबल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन आवर right. इंडस्ट्री, that is called that is present in the balance sheets. Absolutely, absolutely. Yeah, Thank you, Vijendra ji. Yes. thank you. Perfect, perfect. Farin ने भी रिप्लाई किया है, बैलेंस शीट इज अ कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन. Absolutely right. So balance sheet is a statement that shows financial position of a non-profit on a particular date. See, this is important. Farin, you have mentioned for a year, but the important point here for all of us to understand is that balance sheet is as on date, is not for the entire year. Unlike income and expenditure statement, which is for the entire year. कि पूरे 12 महीने में क्या क्या हुआ है, कितना इनकम आया है, कितना एक्सपेंडिचर गया है, और हमारे 12 मंथ में कितना सरप्लस या डेफिसिट बचा है. दैट इज व्हाट गेट्स रिपोर्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. लेकिन बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर दिन में आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये समझती है. ओके, बैलेंस शीट में हम लिस्ट करते हैं टिपिकली असेट्स, लायबिलिटीज, ट्रस्ट फंड्स हम लिस्ट करते हैं, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस हो गया या कॉर्पस फंड्स हो गए जो अक्यूमुलेट हो गए.
as on a particular date. Typically, we make the balance sheet as on 31st March every year because that is the year ending, closure of the financial year. तो इट शोज दैट कि एज ऑफ 31st मार्च के दिन पे आपके कितने असेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, कितने आउटस्टैंडिंग है, कितने रिसीवेबल्स है एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. ओके, बैलेंस शीट बनाई जाती है आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड इट शोज व्हाट अ नॉन प्रॉफिट ओन्स एंड ऑल्सो व्हाट इट ओज टू अदर्स, टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. अगेन इसका भी एक फॉर्मेट होता है, जैसे सेक्शन 8 कंपनीज के लिए अलग फॉर्मेट है एज पर द कंपनी लॉ, और स्टेट स्पेसिफिक लॉ में आपको नो वो लॉ के अंडर जो भी फॉर्मेट है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा व्हेन यू प्रिपेयर बैलेंस शीट. One example we have taken again from Maharashtra Public Trust Act because this is state specific act. कंपनी लॉ का फॉर्मेट तो आपको नो मिल ही जाएगा, नो अंडर शेड्यूल 3 आप गूगल करोगे तो अंडर द कंपनी नो फ्रॉम एम सी ए वेबसाइट. बट दिस एग्जाम्पल इफ यू सी यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज प्रॉपर्टी एंड असेट्स दैट गेट्स रिकॉर्डेड. उसमें बाइफर्केशन ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, fixed assets, current assets, cash and bank balance. And then there is liabilities and advances on the left hand side. It starts with trust funds and corpus, then earmarked funds. जैसे restricted funds अगर कोई non profit receive करता है तो it gets recorded under this earmarked funds. Then there are loans if any from taken from trustees or somebody else, liabilities and provisions. Okay, this is a format, sample balance sheet format. Okay, any questions so far? Before we move on to the receipts and payments account, which is again very important for the non-profits. Receipt and payments typically आपको for profits में नहीं दिखेगा, वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है फॉर अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. देयर आर मल्टीपल वेरियस वेज टू रिपोर्ट कैश फ्लोज, लाइक डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड. लेकिन वी एज नॉन प्रॉफिट्स वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड what is relevant for us is receipts and payments account. ये yeah, I mean, before we talk more in detail, like, can somebody briefly tell me what is receipts and what do you understand by receipts and payments? Okay, money in, money out. Ankush has reverted. Yeah, I mean, that is a simple way to understand, right? कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्चा हुआ, irrespective of whether जो पैसा आया whether it pertains to that particular year as income or whether it pertains to that particular year as expense, it doesn't matter. Just because money has come in, we will have to record it as receipts during the year. और पैसा अगर खर्च हुआ है तो हमको उसको एक्सपेंस की तरह पेमेंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. Okay, that is a simple summary. So just to understand, it's a summary statement that records all cash and bank receipts and payments of a non-profit during the accounting period. Again, receipts and payment is prepared for the entire year, 12 months. Balance sheet is only for on a particular date, but receipt and payments like income and expenditure is for the entire period, entire year. Okay, irrespective of whether such receipts and payments pertains to so it can be either for past period, current period और future period. इसमें वो accrual का concepts नहीं आता है कि payable, receivable, advances received, advances paid. All those concepts are not relevant when you prepare receipts and payments. Okay, key features, it's on cash basis, not on accrual basis. Shows total cash inflows and outflows. इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन. जैसे हमने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस शीट में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दोनों आ जाते हैं. अपने अगर फिक्स्ड असेट भी खरीदा रहेगा दैट ऑल्सो विल बी रिकॉर्डेड एज पेमेंट मेड टुवर्ड्स फिक्स्ड असेट परचेज. ओके, और अगर अपने एक कॉर्पस आया आपको या कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड्स आया या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स आया, जो भी पैसा आया आपको इनकम रिसीट में बुक करना पड़ेगा. ओके, एट द एंड दिस विल नॉट शो यू सरप्लस और डेफिसिट, बट इट विल जस्ट शो यू ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक.
Okay, so receipt and payments is a cash summary. It is not a performance statement like income expenditure statement. Okay, again, a very simple format, sample format that we have kept here of receipts and payments. So typically, receipt and payments begins with opening cash and bank balance, जो एक नॉन प्रॉफिट के पास होता है. Then, we have to add donation received or corporate donation received, yeah, interest, bank interest received, or any other interest that we receive, we have to record as under receipts. Less we have whatever we have paid, जैसे grant utilized for say program related खर्चे हो गए या admin related खर्चे हो गए, fixed asset खरीदा रहेगा, or whatever, all these payments get recorded under payments in the receipts and payments account. And then whatever balance that you get, so opening plus receipts minus payments, whatever balance remains is the closing cash and bank balance. Typically that will match with your actual bank balance in your bank statement. And if you are maintaining cash or petty cash system, that balance should match with your actual cash that you have in your petty cash. ओके, दिस इज जस्ट वन फॉर्मेट. यहाँ पे अभी इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है अंडर द कंपनी लॉ या फिर इवन अंडर द स्टेट स्पेसिफिक चैरिटी लॉज जो रहते हैं उसमें भी इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है. इनफैक्ट इनफैक्ट रिसीट्स एंड पेमेंट्स मैंडेटरी भी नहीं होता है बनाने के लिए फॉर अ नॉन प्रॉफिट. लेकिन अगर आप देखोगे कि इनकम टैक्स में you can claim application of income. I mean, that rule that is applicable for non-profits कि आपको कितने खर्चे आप उसको कितने खर्चे आप यूटिलाइज दिखा सकते हो. That happens on receipts and or on payment basis. So when you prepare computation of income under income tax law, that is when this becomes relevant. You make computation based on receipts and on the basis of receipts and payments, and typically not based on income and expenditure statement. तो वो टाइम पे ये बहुत relevant हो जाता है. Plus even if you are registered under FCRA law, FCRA में it is mandatory to submit receipts and payments account to the Ministry of Home Affairs. जब भी आप आपका एनुअल रिटर्न फाइल करते हो एट द टाइम ऑफ इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, जब भी आप FC4 फाइल करते हो तो उसमें मैंडेटरी रिसिट्स एंड पेमेंट्स भी सबमिट किया जाता है अलॉन्ग विथ income and expenditure statement and balance sheet. Okay. In fact, I have also seen a lot of times authorities have started somewhere asking for receipts and payments now uh, when it comes to income tax as well. Mandatory नहीं है लॉ के अंडर, लेकिन authorities मांगने लगे हैं इसके बारे में, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तो अक्रूवल बेसिस पे बनता है, बट ऑथोरिटीज ऑलवेज वांट टू सी कि अब कितना पैसा आया है कितना खर्चा किया है, उसका एक स्टेटमेंट बनाकर भेजो हमको. तो दैट इंफॉर्मेशन दैट दे आस्क इज नथिंग बट relevant, nothing but it is coming from receipts and payment statement only is what they are asking. Okay, so yeah, I mean this is a important statement for non-profit specifically. If you're a Section 8 company, आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हो, ओके, एक उसका एक फॉर्मेट होता है अंडर द कंपनी, दैट इज एन इनडायरेक्ट मेथड format that is prescribed under the company law, which is not so relevant when it comes to non-profit. For profits के लिए वो relevant होता है वो format, लेकिन for a non-profit, it is important for all of us to understand is that for a non-profit, a simple receipt and payments will also help answer a lot of questions from say authorities, from donors, or from whatever, from external stakeholders when they want to look at the cash flow position for a non-profit. Okay, किसी के कोई questions है इसके ऊपर? I have two questions. Yes, Sorry. Anurag. One is how to treat fixed deposits. Should we include into bank balance if there Yeah. is no movement or if there is a majority of fixed deposit? Yes, yes. No, it's a very relevant question. So see, typically how we do it is that
again, there is no prescribed format as such, but fixed deposits, it is better that we record it, just below this, like opening जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, एक तरीका होता है कि इसके अंदर ही हम बाइफरकेट करें इन सेविंग्स अकाउंट कितना है मेरा ओपनिंग एंड मेरे फिक्स डिपॉजिट में कितने ओपनिंग है, एंड देन दैट ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ योर क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंसेस, अगेन सेविंग्स एंड फिक्स डिपॉजिट, दैट इज one way to report it. Though there are certain organizations who treat putting money in fixed deposit as investing activity. So if that is the stand taken by non-profit, then it will form part of, say, payments में आपको record करना पड़ेगा कि payment made to into fixed deposit. So there are, like, both the ways in which you can report it in your in your receipts and payment account, as long as you are disclosing it properly and clearly on the face. Any of the method is okay. So suppose if we include it in the opening balance and if there is a uh, maturity of the fixed deposit, Correct. तो so receipt should में it come आएगा. again at a receipt? Correct. Absolutely. Yes. It will come So, to receipt from fixed deposit maturity. ऐसे एक line आएगा. okay. So it is a double counting in the receipt side. One is in the opening balance and others in the receipt. Correct. But अगर देखो, अगर मैच्योरिटी होता है तो आप फिर से बनाओगे, राइट, उसको. आई एम अज्यूमिंग कि यू विल ऑल्सो, like, if the FD is getting matured, you will again prepare, if you are making FD, then again it will be like payment made towards FD. So again, it will get nullified here. But suppose if the amount that we are making the FD is lower or higher, so Right. but aren't we counting it twice in Yeah, the yeah. receipt No, I get side? it. Yeah, I get it. So if in that case, then what we can do is, I just come in, sorry. yeah, So Anurag ji, it's not counting it twice. It's just movement from FD to bank balance. So I understand where you're saying कि दो बार आ जाएगा, but it's Once it is actually coming in opening balance, and secondly, it is coming receipt when I'm receiving it in the savings bank account. no. So FD से savings में जाएगा वो. हाँ, वो FD से savings में जा रहा है ना. So depends how you are making receipts and payments account. So you are in this way over here just saying कि ये ऊपर में cash balance is and fixed deposits, right? So when you're saying receipts in the bank will include fixed deposit. You are not tracking fixed deposits का receipts, fixed deposits का payment. You are tracking bank का receipts and bank का payments. You are stating कि fixed deposit में इतना balance है. So when you make your closing, right, तुम्हारा fixed deposit balance कम हो जाएगा, तुम्हारा bank balance बढ़ जाएगा. So it is not double counting. So in that case, when we are saying receipts for the year, then we are not writing the maturity of the FD. You are. The receipts are not for fixed deposit. आप समझ रहे हो? फिर तो आपको पेमेंट्स में भी दिखाना पड़ेगा ना मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट. आप आई नहीं, विल मैं जस्ट मैं मैं उसको फिर से फिक्स FD नहीं कर रहा हूँ. आप एफडी नहीं कर रहे हो फिर से, लेकिन एफडी से अगर मूवमेंट हो रहा है तो आप खाली रिसीट्स में कैसे दिखा सकते हो? आप फिर पेमेंट्स में भी दिखाओगे ना कि फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हुआ, अगर आप ओपनिंग बैलेंस में ले रहे हो, राइट? ओके, तब आपका मतलब है कि FD से गया पैसा इसलिए वो हाँ, पेमेंट में भी बट आ व्हाट जाए. यू आर ट्रैकिंग हियर इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर बैंक बैलेंस. फिक्स डिपॉजिट का आप सिर्फ बैलेंस स्टेट कर रहे हो ऊपर और नीचे, समझ रहे हो? वो फिक्स डिपॉजिट का रिसीट्स एंड पेमेंट्स नहीं है. I hope you're getting clear. So example, apart from 67 lakhs, say you had 10 lakhs of fixed deposit. So what would have happened? ये opening balance के नीचे fixed deposit 10 lakh rupees आता. Correct? On the same page. Yeah. And the balance would have been 77 lakhs. On the Okay. same page. Yeah. Now supposing that fixed deposit got matured and you added it to the receipt side. Okay. Right, so what would have happened? ये 1197 के बदले 12977409 हो जाता. Correct? Okay. And in the end, this closing cash and bank balance would have been 4384 on the same page. Yeah. At the same time, इधर closing fixed deposit 0 हो जाता. आप ये assume कर रहे हो कि ऊपर का fixed deposit 10 लाख और नीचे भी fixed deposit 10 लाख. बट जब आपने इसको मूवमेंट किया तब आपका ऊपर 77 था और सारा कैलकुलेशन करोगे तो नीचे 43 आना चाहिए ना, बिकॉज आपने एफडी बनाया ही नहीं है.
करेक्ट। Okay. तो हियर आपका फिक्स डिपॉजिट बैलेंस क्लोजिंग में जीरो आ जाएगा। आप खाली ऊपर फिक्स डिपॉजिट दिखाओगे, नीचे नहीं दिखाओगे, नहीं चलेगा ना। आपको ऊपर अगर आपने 10 लाख दिखाया है तो नीचे आपको जीरो बैलेंस दिखाना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट का, इफ यू हैव नॉट मेड एनीथिंग। सो देर इज नो डबल काउंटिंग, इट्स जस्ट मूविंग ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट टू बैंक बैलेंस। Okay. Is that clear? Yeah. Does that help? Yes. Okay. Thank you. And now my second question. How to Yeah. prepare receipt and payments, particularly the payment side from the accounts. From We the have ledger accounts, accounts, we have a cash book, bank book, we have a trial balance, we have income expenditure account, we have the balance sheet. Now, how to prepare the receipt and payment side? yeah. So see, one way to do that is key. There is a reconciliation that needs to be done between income and expenditure expense side and payables. Okay. So you would have booked, if you're following accrual method of accounting, then on the income and expenditure, you would have booked all the payables as well, right? Because in expense incurred but not paid. So those kind of expense you will have to first reduce from the expenditure side by looking at the on the balance sheet. So it's a reconciliation that you will have to do, taking your expenditure minus the uh, minus the liability side के payables. At the same time आपको वो add करना पड़ेगा what you were no, if you are only asking about the payment side, then yeah, this is what you will have to do. Because that will also involve capital expenditure, no? Because when we are looking at payment side, Yeah, yeah, absolutely. Yeah. it So will yeah, also represent advances, receipt from parties, other things correct. also will come, not only expenses. Correct, absolutely. I mean, so those are the directly you will get it from your balance sheet, right? जो भी फिक्स्ड असेट खरीदा है, जो इन्वेस्टमेंट्स पे किया है, तो आपको असेट साइड से मिलेगा ही वो सब चीजें। वो तो those balances or those expenses that you have made and you have paid cash, assuming that you have purchased fixed asset on directly as per on cash and not on credit basis. Okay, you will have to see each and every transaction and then uh, see what will go in your receipts and payments. Principally, I found कि receipt and payment is nothing but a summary of cash book or bank book, right? Yeah, fair. Yeah, Right. So now the thing comes कि we record whenever we see the bank accounts or bank book, on the payment side we get the names of the vendors and the person to whom we have paid. correct. So we cannot, if we take out the summary even from Tally, I found the names of all the persons, of course, consolidated. If it has been paid to Anurag Sharma during the whole year, so it will Correct. come as a consolidated. I will Correct. not get the why Anurag Sharma was paid. Was it a salary, consultant, rent, Correct. printing No, so station, that, whatever? yeah, so that you will have to go inside the ledger to understand the nature of payment from each of the ledger accounts. So When if Anurag Sharma you have paid, you have to go and track कि उसके अगेंस्ट एक्सपेंस क्या बुक किया है आपने, आपके इनकम yeah, so I एक्सपेंडिचर, was to know looking the in a nature. proper method of preparing the receipt and payment, which I नहीं am not getting it thing. So Otherwise, I have Anurag, to go I and have a each and couple of every suggestions. entry. Yes, Ravi, sorry. Anurag, I have a couple of suggestions. You can make vendor classifications in your ledgers. Like instead of just Yeah, having sundry creditors, you can make sundry creditors for salary, sundry creditors for consultants, sundry creditors for reimbursement, sundry creditors for XYZ. So that when you are looking at this, you can see towards what is this payment outstanding. That is one way of doing it. Second is, are you maintaining bill by bill transactions, or are you just maintaining debit credit based on debtors and creditors? Just debit and credit, not bill wise. Right. So when you move to bill by bill, you will be able to yeah, generate this report also. So if you start tracking bill by bill information in Tally, you will be able to get an understanding of the payments, because when you are paying, you will tag against which particular bill this was paid, and that movement then get captured in receipts and payments is what my last understanding is, but I will have to check again. You will have to move to capturing bill by bill, because there's no way na uske baghair how will somebody create a cash flow. So there are different methods of creating cash flow, right? One is through starting with the profit and then going into what the movement has been, what is cash, what is non-cash, and then creating it.
right? But that's a different method of cash flow, which is used by, like Doit said, by for-profits. From a non-profit perspective, this is what makes sense. Because like we are seeing here, like payments, program related payments, admin related payments. Now, program related payments may be the different projects that we are having, right? And under each project, what are the expenses we have made, which could be salary, consultant, printing, traveling, and all those things. So it becomes very difficult to prepare. It almost goes like to going again each entry to look where it is gone. So, but at least we Yeah. found it very difficult to prepare it. So I was Yeah. looking at if there is a way to out to it. Nee, so see, practically, like I get it what you are trying to call out. I get it that, and but unfortunately, see, even if there is a feature in Tally software, if you see receipts and payments, उसमें बन के आता है. Hmm. Okay, but again उसमें आपको current liabilities और current assets ऐसे एक दिख जाएगा एक हेड. वो चीज वो उसको लिए आपको डीप डाइव करके ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लुकिंग एट द क्रेडिटर एंड डेटर कि हमने उसको क्यों पेमेंट किया है फॉर व्हाट by linking it to like the bills that have been cleared. So like Ravi was saying, if you are making bill by bill and using those features like against reference while making payment and creating a reference for each of the invoice that you book, it gets little easier. But if that is not the method that is followed, then there is no way other than going in each of the journal entry or each of the payment entry and then linking it to the right invoice, which will again happen outside of Tally. Yeah, Yeah, we face a lot of problem in preparing receipt and payments. yeah, yeah. Yeah, no, fair point. Maybe you can start having this bill-wise recording system. The bill wise is difficult, no, because it is not a continuous billing. We are not sales. It is the donors that is receiving, so that part is okay No, receipt. no, We book it. Anurag, this is about The payments. So when a payments. payment Ah, is made, it is made against a reference. It Yeah, is made against a booking. So today, if there is a journal entry for an expense, what are you paying? Are you paying two, three journals consolidated? Are you paying two, three expenses consolidated? Are you paying one-on-one? Unless there is that information available for a system, the system is not going to understand what you are making the payment for, right? If I have 5 transactions against Ravi and I'm making a payment to Ravi, the system has no way to tell whether you are paying proportionally for all the 5 expenses. Are you setting off on FIFO basis? Are you setting off on LIFO basis? So you will have to change something in Tally, which is what we are suggesting, which is the bill by bill entry. That against each payment and each expense, start adding invoice numbers and references. I know it's a tedious task and accountants always hate doing it. All the systems that we work with, there is a lot of resistance in introducing this because it means that they have to ensure that they spend that much more time on each entry. But unfortunately, that's the only way to go ahead. If you look at systems like Zoho, they already prepare it because they don't allow you to do entry otherwise. Zoho will give you a receipts and payment account in this way. Why? Because the only way to make entry is by booking an expense and adding a payment against an expense. So unless you add a payment against an expense, there is no way for a system to know what are you paying for. okay. So if I'm making Ravi payment 5 things, so I have to write Ravi rent, Ravi printing, Ravi traveling, and so No, on. no, that's not what I'm saying. You have to change the system in Tally to introduce bill by bill tracking. There is a system in Okay. Tally that you have to change. It's called bill by bill. You can look it up. Tally has a Okay. very extensive manual online. You can look it up and you can introduce that and you can see how that works out. Like do a small test company, make a test company, do the entries, you will be able to see the result. Okay. Okay. ठीक. Thank you. Dohit, Cool. I had a question actually. Yeah. So if my organization is receiving money on e-learning courses or maybe on books if we are selling, so how are we going to show in the balance sheet? You're selling, e-learning. Maybe suppose we have a courses e-learn. Yeah, It's an yeah, e-course yeah, and we are receiving money against that. It's coming right. to our bank. Sure. So how we are showing in the balance sheet? Nee, so it will get recorded as your income, right? It's an income, it's coming into bank. Right.
So do you raise invoices for each of the courses that you're selling? If somebody asks, but not a regular practice. Yeah, so the right way to do is that, raising all the invoices and booking those invoices in your income It's income. and expenditure statement. Yes. Okay, so it's not a bank balancing, it will be an income. Yeah, it will be your income. You're selling something, right, as a non-profit. So it will be your income for the non-profit during the year. And once income is booked, you will just record your receipts against that income, कि income received. Okay, Yeah, ठीक है, thank you. yeah. Anybody has any questions? Else we'll just take a short break of 5 minutes. Okay, if nobody has questions, then maybe we'll just, yeah. Yes. So one reflective question. कोई बता पाएगा what forms part of capital for a non-profit? For a non-profit, what is typically called as capital? Or maybe equivalent of a capital when it comes to for-profit? Anyone? Any guesses? Sir, may I? Yes, Virendra, It, yes. yeah, the surplus of the grant which was received by funding partner, yeah, donor, Okay. and it will consider as a capital part. Okay. Yeah, fair. ठीक है. That is again, जो surplus generate होता है, becomes part of your reserve and surplus and becomes part of trust fund. But yeah, so there is one more concept called corpus that we all need to be aware of. And corpus, whenever we receive from any donor, is also forms part of capital for a non-profit. Reserves is something that gets generated for a non-profit internally at the end of the year from unrestricted funds that gets accumulated. उससे एक बनता है. लेकिन corpus ये कि at the time of giving only, it takes the nature as of capital for a non-profit. Okay. So yeah, we'll talk about the accounting for corpus funds. Okay. In the second part of today's session. So corpus, when we talk about corpus, can somebody just share what do you understand by the word corpus? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पस पिच भी करते हैं टू द डोनर, उनको मिलता भी है काफी सारा कॉर्पस. बट ये कॉर्पस होता क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉर्पस? व्हाई डू वी आस्क फॉर कॉर्पस? It is a fund which is not to be spent in day-to-day activities or revenue expenditure, but Right. and any income that is derived can be used. Perfect. Yeah. So corpus is typically, so there is no definition of the word corpus under Income Tax Act typically. But Jobi and like Anura rightly said, this is kind of a permanent fund which is not to be used for day-to-day activities by a non-profit. Okay, and this forms part of your capital fund for a non-profit. Okay, it is kind of it continues in its existence permanently. Okay, लेकिन सबसे important चीज हमको समझनी है, for a corpus to be treated as corpus, we need specific direction from the donor. Okay, under the income tax law, only then such donation can be treated as corpus. Okay, and when a non-profit receives corpus, mandatorily ये corpus donation हमको invest करना होता है under the specified modes as per section 11(5) under the Income Tax Act. And your specified modes are listed. Some of the so this is not a complete or exhaustive list that you can find from income tax website. It is a very long list, but जो commonly used modes होते हैं is savings account, current account, even if you have recurring or fixed deposits with your bank, all are allowed modes to keep corpus donations. Even immovable property is allowed as the allowed investment for parking your corpus funds. There are certain mutual funds which are allowed under the Income Tax Act. Again, जिसमें आप corpus पैसा डाल सकते हो. There are certain debt instruments like infrastructure finance company registered with RBI and so on.
then units of Unit Trust of India, government saving certificates, and there are other schemes of the central government such as small saving schemes and so on. So these are the typical commonly used investment modes in which corporate donation is parked. ओके कोई बता पाएगा कि ये जो किसने ये देखा है ये सेक्शन 11(5) और ये रूल 17(c) इसके पहले हैज एनीबडी गॉन थ्रू दिस कंप्लीट लिस्ट? Yes, no, can you just type it in the chat box? Yes, if you're aware of this section 11(5), read with rule 17(c). Yes. Okay. We have gone through. Okay. In fact, we were looking for investment in mutual funds. Okay. So that's Okay. at that time we went through it. What are the mutual funds which we Got can it. deposit? Got it. Fair, yeah. There are many no's in the chat box. Yeah, I mean, this is important for all of us to know कि ये जो section 11(5) is very critical section when it comes to parking of accumulated funds under the Income Tax Act and also corpus funds. इसमें एक question है मेरा. Ankush, you have raised your hand, but before that, I just want to ask a question. If since Anurag, you have gone through this list, will you be able to answer that whether income tax allows any equity investments as well to non-profits or no? Equity investment where? Any idea Any about company, any equities? corporates? Yeah. There are some. Yeah. So only in certain public sector companies, income tax allows a non-profit to park their funds in equity of public sector companies. Okay, only specific, not all the corporates. That is just one point I wanted to bring out. Yes, Ankush, you have a question. Can you just unmute yourself? यस दोहित दोहित एक सवाल था. सो हाँ. आई थिंक बहुत टाइम पहले ना हमारे एक सीए थे, तो उन्होंने बोला था कि मुझे याद आ रहा है कि अगर हमारे जो ट्रस्ट डीड है उसमें अगर मेंशन है कि हम कोई टाइम डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं, कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, तभी हम कॉर्पस शो कर सकते हैं और तभी हम कर सकते हैं. सो इज दैट सो? ये एक्चुअली में वैलिड है या नहीं है? Yeah, no, so we'll come to that. So I think what you are referring to is self-created corpus by a non-profit. We will come to that topic also in the subsequent slide. For now, let's understand what is corpus. Okay. Okay, so far, anybody else has any questions so far? Are all SEBI related registered mutual funds are allowed to be invested in? No, not all. There are very specific mutual funds that are allowed. Again, it is prescribed under the companies under the Income Tax Act. You will have to look at those circulars to find out, whether whatever mutual fund that you are referring to is allowed under the the circular issued by the income tax. Because One more 1023 allows mostly listed mutual funds, but there are some articles, etc., which has said कि mainly equity related mutual funds are not allowed. Right. नहीं, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ही कम है, सारे नहीं है. Just to answer you, that all SEBI registered are not allowed mutual funds. Okay. Yeah. Okay. So we'll move on to the next slide, which is where we'll talk about the types of corpus donation. Okay, तो एक होता है created, the corpus that is created with a specific direction from a donor. ओके, उसमें भी दो पार्ट्स हो सकते हैं कि कोई डोनर बोलेगा कि ये मैं कॉर्पस आपको दे रहा हूँ नॉन प्रॉफिट के लिए, एंड इट इज टू बी यूज्ड फॉर ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस. एग्जांपल, purchase of capital asset or maybe purchase of property only. I am giving you a corpus only for purchase of property. Then it becomes restricted corpus. Whereas there could be some donors who will just say कि I am giving you corpus funds, but it is unrestricted. There is no condition attached कि ये आपको property purchase में ही लगाना है, या आपको ये म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करने हैं, या आपको ये फिक्स्ड डिपॉजिट में ही रखना है. So these are called as unrestricted corpus funds. Again, these are donor given corpus funds. Okay, this is one type of corpus. Now there is another type of corpus which is kind of used by non-profits to create by their own reserves, from their own reserves. Okay, these are called as self-created corpus funds. तो ये जो सेल्फ क्रिएटेड कॉर्पस फंड्स है ना, ये दिस इज नॉट रियली, इट इज नॉट लीगली कॉर्पस फ्रॉम अ इनकम टैक्स एंगल.
income tax only recognizes donor given corpus with a specific direction that this is to be used towards corpus, no other corpus. Self created corpus could be in the form of कि अगर आपके कुछ सरप्लस जनरेट हुआ हो ओवर द इयर्स और आपको उससे एक इमरजेंसी फंड बनाना है या आपको एक सस्टेनेबिलिटी फंड बनाना है, वो आप कर सकते हो, बट दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉर्पस फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ एंगल. Okay, so Ankush, just to answer your question now, maybe what your trust deed would have said is that you cannot create self-generated corpus. Okay, if that is the case, then again, you have to follow what is given in your trust deed. Unless your trust deed says that you cannot even receive corpus from outside donors. Is that what your trust deed is saying? नहीं, ट्रस्ट डीड में कुछ मेंशन ही नहीं है. Acha, trust deed is silent, right? Then Yes, there is no restriction. I mean, then you can definitely receive corpus from outside donors. और अगर आपको सेल्फ क्रिएटेड करना है, कोई सस्टेनेबिलिटी फंड बनाना है या इमरजेंसी फंड बनाना है, तो if the trust deed is silent, then you can go and create that. I don't see any restriction from that perspective. आई थिंक किस हेडर में, एज इन ये सस्टेनेबिलिटी फंड या इमरजेंसी फंड किसी में भी हम वी कैन क्रिएट, राइट? Yeah, but that will not be corpus. वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में एक अलग से फंड बना रहे हो आप from your past surplus. That you can create. That is not a challenge. थैंक यू. Yes. तो अभी हम जो आगे वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, दैट वी विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कॉर्पस फ्रॉम इनकम टैक्स एंगल, विच इज द कॉर्पस रिसीव्ड विद अ स्पेसिफिक रिटर्न डायरेक्शन फ्रॉम अ डोनर. उसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, तो ऐसा जो कॉर्पस है जो एक नॉन प्रॉफिट को मिला है फ्रॉम डोनर्स, typically such corpus is not to be utilized in your day-to-day activities, like Anurag also said in the beginning. ये जो कॉर्पस आता है वो आपका इनकम भी नहीं कहलाता है फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ एंगल. ओके, आई जस्ट डिविएट लिटिल बिट फ्रॉम अकाउंटिंग टू इनकम टैक्स लॉ, बिकॉज ये कॉर्पस का अकाउंटिंग समझने के लिए भी हमको पहले कॉर्पस ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा फ्रॉम इनकम टैक्स एंगल. ओके, तो ये और नेक्स्ट स्लाइड हम थोड़ा उसमें टेक्निकल हो जाएंगे. वी विल डिस्कस लिटिल बिट टेक्निकली फ्रॉम इनकम टैक्स एंगल. ओके, सो व्हेन यू रिसीव कॉर्पस, ये आपका इनकम नहीं कहलाया जाता है फॉर अ नॉन प्रॉफिट. ओके, लेकिन कभी कोई सिचुएशन आ सकती है, जैसे अगर, एंड लाइक आई सेड, कॉर्पस इज परमानेंट नेचर, आपको ये यूज नहीं करना होता है, लेकिन कभी कोई सिचुएशन आ सकती है कि अपने फंड, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंड रेज नहीं हो पा रहा है. a situation comes where funding situation is very bad and you are left with your only वो corpus funds जिससे आप एटलीस्ट सस्टेन कर सकते हो till the time your funding situation becomes better. तो ऐसे केसेस में you can go and use your corpus. लेकिन जब भी आप यूज करते हो कॉर्पस, वो टाइम पे आपको it is within 5 years you will have to reinstate back that corpus, okay, in the corpus fund when the funding situation improves. That is what income tax law talks about. Okay, so corpus, first of all, तो corpus आप ले सकते हो as a non-profit from a donor with a specific direction. आप उसको टिपिकली डे टू डे खर्चे में यूज नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर कोई फंडिंग सिचुएशन टाइट है या आपको आप फंड जनरेट नहीं कर सकते और आपको सस्टेनेंस के लिए आपको कॉर्पस में डीप डाइव करना अगर ऐसा सिचुएशन आता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो. लेकिन आपको तभी एप्लीकेशन ऑफ इनकम या फिर आपको तभी एक्सपेंसेस उसके क्लेम नहीं कर सकते हो. आपको उसको रीइंस्टेट करना. Okay, we will talk about application in the subsequent slide. Sorry for that confusion. But आपको इतना याद रखना है ये स्लाइड से कि आपको उसको 5 साल में फिर से कॉर्पस फंड में रीइंस्टेट करना पड़ेगा. That amount that you have used from corpus fund. Okay. Now, before we move ahead, there is this concept of application of income under the income tax law. Okay, which I will just briefly talk about. Again, very important for all of us to understand corpus in entirety. Okay, जैसे हम जो नॉन प्रॉफिट से जो 12A रजिस्टर्ड है, there is a requirement to कि जो भी इनकम जनरेट होता है
उसका around 85% we have to utilize during a year. Okay, that is the rule that prevails. Okay, now application of income is basically it refers to the actual usage of that income to claim exemption for a non-profit. Okay, तो general rule ये बोलता है कि any NGO which is 12A registered उसको at least 85% यूज करना होता है फॉर चैरिटेबल पर्पसेस. ओके, नाउ इन केस आपने जो कॉर्पस अगर यूज किया हो ड्यूरिंग द ईयर, जब भी आपकी फंडिंग नहीं आई हो, आपको कॉर्पस यूज करना नो करने की सिचुएशन आती है, उस केस में आप जो भी खर्चा करते हो कॉर्पस से वो आपका ये 85% के लिमिट में कैलकुलेट नहीं हो सकता एज पर इनकम टैक्स लॉ. लेकिन जब भी आप 5 साल के अंदर जब भी आप रीइंस्टेट करते हो ये पैसा बैक टू दैट कॉर्पस फंड, ओनली एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू claim it as application of income. Okay, when I say application of income, it is nothing but you will be able to claim it as actual usage of your non-profits income. Is this concept clear? किसी को डाउट है तो आई कैन रिपीट अगेन. Rohit, please repeat it again. Yeah. So I'll repeat one more time. Okay, so application of income ये जो rule है ये क्या बोलता है कि what actually a non-profit spends is called as application of its income. Okay, तो अगर कॉर्पस का पैसा एक नॉन प्रॉफिट यूज करता है, जब भी वो यूज करता है तभी वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं क्लेम कर पाता है टुवर्ड्स 85% यूसेज. लेकिन जब भी वो रीइंस्टेट करता है बैक विद इन 5 years बैक टू अ कॉर्पस फंड्स, only at that time the non-profit can claim it as application of income. ओके, इतना अगर भी समझाओ ना, ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा with the example also that we will talk about in the subsequent slides. But for now let's just understand कि कॉर्पस हम यूज नहीं कर सकते. अगर आप यूज करते हो तो आप उसको एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते. एक्सपेंस तभी क्लेम कर सकते हो जब भी आप फिर से कॉर्पस कॉर्पस फंड में रीइंस्टेट करें. Okay, this is the simple understanding of how corpus works. Okay, we will talk about this more in the subsequent slides as well. Okay, for now this is somewhat clear at least. Yes, no, no, if you can just type somewhat clear. Yes. Okay. Yeah, Sure. somewhat clear. Sure, ठीक है. So before we move ahead, we all need to understand कि कॉर्पस का एक तो सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट होता है. इवन द लायबिलिटी साइड, इफ अगर आपको अगर एक नॉन प्रॉफिट को कॉर्पस रिसीव होता है तो एक रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे कॉर्पस फंड्स अलग से रिपोर्ट करने मैंडेटरी है. आप इनकम टैक्स रिटर्न भी जब भी फाइल करते हो तो उसमें भी आपका कॉर्पस जो अपने डोनर्स से लिए हो, उसका ओपनिंग बैलेंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, if you have spent, then whatever you have spent during the year from corpus, and whatever is your closing balance of corpus, you have to report it separately in your income tax return and also in your tax audit report. Okay, then ये जो फॉर्म 10BD हम भरते हैं जब भी हम 80C का बेनिफिट देने को फॉर द डोनर्स इन द मंथ ऑफ मे, उसमें भी अगर किसी डोनर ने आपको कॉर्पस दिया हो तो स्पेसिफिकली आपको फॉर्म 10BD में कॉर्पस का रिपोर्ट करना पड़ता है कि वी हैव रिसीव्ड दिस डोनेशन टुवर्ड्स कॉर्पस एंड नॉट फॉर जनरल पर्पस और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, बट यू हैव टू सेपरेटली रिपोर्ट इट. ओके, दिस इज ऑन द रिपोर्टिंग साइड ऑफ कॉर्पस. ओके, वी विल टॉक अबाउट अ केस सिनारियो नाउ जिसमें शायद ये और कॉन्सेप्ट ये और भी क्लियर हो जाएगा. ओके, सो सपोज देयर इज अ नॉन प्रॉफिट called as XYZ Foundation. Okay, ये non-profit receives 10 lakh rupees towards corpus funds from a donor. Okay, in year 1, and it deposits that entire corpus in allowed investments, which is fixed deposit to comply with section 11(5). Okay, year 1 में ये NGO को 10 लाख रुपए आए towards corpus और वो NGO ने फिक्स डिपॉजिट में उसको पार्क कर दिया. ईयर 2 में ओके, ये एनजीओ को कोई भी अदर इनकम नहीं आता है. ओके, सो इट यूजेस 4 लाख रुपीज फ्रॉम दिस कॉर्पस टुवर्ड्स प्रोग्राम एक्सपेंसेस बाय ब्रेकिंग द फिक्स्ड डिपॉजिट.
फर्स्ट ईयर में 10 लाख आए, सेकेंड ईयर में उसमें से 4 लाख ब्रेक किए और खर्चा कर दिया टुवर्ड्स प्रोग्राम एक्सपेंसेस। ओके, थर्ड ईयर में जब ये फंडिंग सिचुएशन थोड़ी अच्छी हुई ये एनजीओ की, तो 7 लाख रुपए उनके अनरिस्ट्रिक्टेड डोनेशन आते हैं। उसमें से 7 लाख में से इट रीइंस्टेट्स बैक दैट 4 लाख रुपीज व्हाट इट हैड यूज्ड फ्रॉम कॉर्पस बैक टू दैट कॉर्पस फंड इन ईयर 3। ओके, इज दिस क्लियर? फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपए आए कॉर्पस, फिक्स डिपॉजिट बना लिया। सेकेंड ईयर में फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करके 4 लाख रुपए खर्चा कर दिया फ्रॉम कॉर्पस। एंड थर्ड ईयर में 7 लाख रुपए अनरिस्ट्रिक्टेड डोनेशंस आए, उसमें से 7 में से 4 लाख रुपए एनजीओ ने फिर से कॉर्पस फंड में डाल दिए, मतलब कॉर्पस फंड का फिर से बैलेंस 10 लाख हो, और जो बाकी का रिमेनिंग 3 लाख है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इनकम की तरह ट्रीट कर दिया। ओके, these are the facts. Now let's understand with the accounting side of corpus, that how will you account this in your books. Let's understand the journal entries. Also, how will we report this corpus in our no, how will this reflect in our income, expenditure and balance sheet extracts as well. ठीक है? So in year 1 it's pretty straightforward, right? Corpus पैसा आया 10 लाख रुपया. So can anybody share like what will be the journal entry? 10 lakh rupees आया, how will we report in our books? क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? Bank account debit to corpus fund received. Perfect. Bank account debit 10 lakh rupees to corpus fund 10 lakhs. Bank account will affect, it will be classified under current assets, and corpus fund you will report it in your balance sheet on the liability side. ऊपर नो रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे टिपिकली हम रिपोर्ट करते हैं कॉर्पस फंड्स। तो ठीक है, उसके बाद 10 लाख रुपए आए, अपने उसका फिक्स्ड डिपॉजिट बना दिया। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन एफडी कॉर्पस टू बैंक अकाउंट। ओके, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हो कॉर्पस का, यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि योर एफडी शुड आइडियली बी आइडेंटिफाइबल कि दिस इज टुवर्ड्स कॉर्पस, यू नो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कोरिलेशन। जैसे 10 लाख का कॉर्पस है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप 10 लाख का अलग से एफडी रखो, सो दैट ऑन द फेस ओनली नो इट मैचेस, लाइक कॉर्पस फंड जितने हैं उसके अगेंस्ट एफडी खड़ा करके रखा है आपने। This is strongly advisable, from income tax law perspective, because income tax law says that wherever you park your corpus, it should be identifiable. So from that angle, it is advisable to park it separately. ठीक है, in year 1 this is clear. तो year 1 के बाद आपका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, कॉर्पस फंड, कॉर्पोरेट डोनेशन जो आपको आते हैं, आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में यू विल पार्क इट एज योर कॉर्पस, अंडर योर कॉर्पस फंड, यहाँ पे 10 लाख रुपीज। ओके, एंड देयर विल बी करेस्पॉन्डिंग investment in FD that you have made against corpus, which will be 10 lakh rupees. There will not be any impact on your income and expenditure account when you receive corpus donations. Okay, all are with me so far? Any questions so far before we move on to year 2? Okay, ठीक है, let's move on to year 2 now. तो ईयर 2 में क्या होता है, ये 10 लाख रुपए आए, उसमें से 4 लाख रुपीज ये एनजीओ ने स्पेंड कर दिए हैं टुवर्ड्स प्रोग्राम एक्सपेंसेस, क्योंकि और कोई इनकम नहीं जनरेट कर पाई। तो फर्स्ट यू विल ब्रेक द एफडी, इट विल बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एफडी। आप ब्रेक करोगे टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख रुपीज। ओके, एंड देन when you spend the money towards program expenses, you will make the payment, you will book it as your program expense. Again, a straightforward entry, program expenses account debit to bank by making the payment of 4 lakh rupees. Okay, इसके बाद एक important एक और adjustment entry पास करनी पड़ेगी, because we have utilized the money out of corpus. So there is an adjustment to corpus fund that we will have to do, additional entry that will get passed, which is transfer of the money of 4 lakh rupees what we have utilized from corpus to reserves and surplus. Okay, ये एक additional entry आपको
आपके बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, which is nothing but you are transferring the corpus fund of 4 lakh rupees from your corpus fund in your balance sheet to your reserves and surplus. Okay, and correspondingly क्योंकि आपने प्रोग्राम एक्सपेंस भी बुक किया है इन ईयर 2 4 लाख रुपीज, जो डेफिसिट, क्योंकि और कोई इनकम जनरेट नहीं किया है ये एनजीओ ने, तो जो भी डेफिसिट है दैट विल गेट ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस. ओके, so let's look at our income and expenditure extract and balance sheet extract. तो इनकम एक्सपेंडिचर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रोग्राम एक्सपेंस आप बुक करोगे 4 लाख रुपीज और जो डेफिसिट जनरेट होगा दैट विल गेट ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस. बट बिकॉज ऑफ दैट account, that adjustment entry that we just posted, see this is how our balance sheet will look like in year 2. ओके, ईयर 2 में क्या होगा, आपका कॉर्पस फंड जो ओरिजिनली 10 लाख रुपीज था, इसमें से 4 lakh rupees you would have used towards program expenses. Hence, you have to transfer 4 lakh rupees from year to reserve and surplus first. Okay, so that your corpus fund balance becomes 6 lakh rupees. क्योंकि आपने 4 लाख तो खर्चा कर दिया, राइट? तो अगर आप ये एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पास करते हो तो आपका ये कॉर्पस फंड इनकरेक्ट दिखेगा, आपका 10 लाख रुपीज ही दिखेगा. बट एट द एंड ऑफ year 2, because you have utilized 4 lakh rupees towards program expenses from corpus, your corpus fund reduces from 10 lakh rupees to 6 lakh rupees. Okay, and your reserve and surplus, you have spent program expenses without having any other income generated. तो जो deficit है that will get adjusted against this transfer of corpus fund. तो आपका reserve and surplus nil रहेगा at the end of year 2. एंड ऑन द असेट साइड, जो 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट लिए थे, पहले इन्वेस्ट किया था एफडी में, वो हमने ब्रेक करके इट विल बी 4 लाख रुपीज वी हैव ब्रोकन फ्रॉम द एफडी, सो माय एफडी बैलेंस विल रिमेन 6 लाख रुपीज. सो हियर अगेन इफ यू सी, क्योंकि हमारा कॉर्पस फंड अभी रिड्यूस होके 6 लाख बना है, उसके करस्पॉन्डिंग फिक्स डिपॉजिट भी 6 लाख रहेगा. ओनली आफ्टर यू आर नॉट doing this accounting treatment of transfer from corpus fund of 4 lakh rupees to reserve and surplus first. So this is an important adjustment that we all need to understand how it works when it comes to corpus funds. Is that clear? किसी को कोई क्वेश्चन है ये year 2 के transactions पे so far? Any questions on why we transferred this 4 lakh rupees from corpus fund to reserves and surplus? Yes, no, if you can just type in the chat Yes. box, it will help me understand. Yes, clear. Okay, perfect. कोई है जिसको नहीं समझाओ why we transferred 4 lakh rupees from corpus fund to reserves and surplus? Okay, okay. If this is clear, then I'll just move on to year 3 now. Okay, अभी year 3 में क्या हो रहा है? Okay, these are just, we just spoke about. ओके, सो ईयर 3 में क्या हो रहा है कि ये एनजीओ ने 7 लाख रुपीज फंड रेज किया है एंड ऑल द एंटायर 7 लाख रुपीज इज अनरिस्ट्रिक्टेड फंडिंग. ओके, नाउ व्हाट द लॉ सेज इज दैट अंडर इनकम टैक्स कि आपको कॉर्पस फंड जब भी आप यूज करते हो, आपको 5 साल के अंदर उसको फिर से रीइंस्टेट करना पड़ेगा. तो 10 लाख रुपए में से जो हमने 4 लाख रुपए यूज किए हैं, आपको वो 4 लाख रुपए फिर से रीइंस्टेट करने हैं विद इन 5 years. दैट इज व्हाट इनकम टैक्स लॉ सेज. So now, because in year 3, this NGO has generated 7 lakh as unrestricted, it decides that out of the 7 lakhs, 4 lakh rupees, it will reinstate back to corpus fund. Okay. So first, so let's look at the journal entry that we will pass when we receive unrestricted donations. It will be a straightforward journal entry कि आपको 7 लाख रुपए आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशंस 7 lakh rupees. Nothing complicated, just a straightforward entry. Okay, now depositing 4 lakh rupees back to corpus. This is a very critical, again, once we have received 7 lakh rupees, अब reinstate कैसे करोगे back to corpus? By creating, जो हमने FD break किया था 4 लाख रुपया, वो अब फिर से वो reinstate करोगे by creating FD. So you will again make an FD by debiting FD account and creating bank account.
okay, by depositing 4 lakh back to that FD. So this is the second entry that you will pass. ये करने के बाद there will be an adjustment entry again when it comes to corpus fund and reserves and surplus. Okay. First, the first entry would be जो क्योंकि अपने जो इनकम बुक किया है in the so in the previous. Okay, I'll just go back to this previous. So because see in this when you receive 7 lakh rupees, you have booked 7 lakh as your donation income, right? तो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में आपको सरप्लस जनरेट हो गया, अज्यूमिंग थर्ड ईयर में और कोई एक्सपेंसेस नहीं है यहाँ पे इस एग्जांपल में, तो एंटायर सरप्लस यू विल ट्रांसफर टू योर रिजर्व एंड सरप्लस. Okay, so the journal entry here will be surplus upon debit to reserve and surplus by transferring 7 lakh rupees to reserve and surplus. इसके बाद जो reinstate किया है हमने corpus fund, see again this is a very critical entry that will get passed, जिसमें you will be reinstating back the corpus fund on your liability side from surplus generated of 7 lakh rupees to the extent of 4 lakh rupees by reinstating back the corpus fund. Okay, I'll just refer to this extracts again, it will be easier to understand. तो 7 लाख रुपए आया आपके इनकम एक्सपेंडिचर में, आपको इनकम दिखेगा 7 लाख रुपए. Assuming there is no other expenses, entire 7 lakh rupees will get transferred to your reserve and surplus side. Okay, तो जब ये surplus, it will show up here under your reserve and surplus carried forward from income expenditure 7 lakhs. ये होने के बाद you will have to transfer this 4 lakh rupees back to that corpus fund from which we had taken that money away in year 2. ओके, क्योंकि अभी पैसा आया है तो आपको इसको फिर से इधर यहां से यहां पे डालना पड़ेगा कॉर्पस फंड. करेस्पॉन्डिंगली आपके फिक्स डिपॉजिट भी अपने जैसे 7 लाख रुपए है उसमें से 4 लाख रुपीज अपने फिक्स डिपॉजिट बनाए, तो अगेन योर कॉर्पस फंड विल बिकम 10 lakh rupees and corresponding fixed deposit will also become 10 lakh rupees. ओके, नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, जो 3 लाख रुपए जो आपने जो एक्सेस इनकम जनरेट किया है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, दैट विल शो अप इन योर करंट अकाउंट इन योर बैंक बैलेंस विच इज दिस 3 lakh rupees. इज दिस किसी को कोई क्वेश्चंस है इसके ऊपर? कॉर्पस का अकाउंटिंग और ट्रीटमेंट कुछ क्लियर हो पाया या कुछ? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस, डाउट्स? कोई anybody wants to unmute and share whether you have understood, not understood? Do you want me to repeat again? I'm happy to do that as well. Understood. Okay. Anyone else? Okay. So I'll move on to that last part, which is जैसे हमने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स लॉ के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इनकम, जो हमने जो रूल डिस्कस किया था कि जब भी हम कॉर्पस से स्पेंड करते हैं तभी हम एप्लीकेशन क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हम जब भी रीइंस्टेट करते हैं ओनली एट दैट टाइम विल बी एबल टू क्लेम इट एज एप्लीकेशन. नाउ इन दिस एग्जांपल दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट, कोई बता पाएगा कि कौन से ईयर में दिस एनजीओ कैन क्लेम एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर द 4 lakh rupees दैट वाज यूज्ड आउट ऑफ कॉर्पस? Third year. Third year. Perfect. Yes. So in year 2 we have just used 4 lakh rupees out of corpus, but usage is not considered as application of income in year 2. Only in year 3 जब भी हम ट्रांसफर करते हैं वो पैसा back to corpus, only at that time we are allowed to treat it as an application of income. Is this making sense? How do we differentiate the expenses claimed from the corpus fund in the income tax return? या तो उसमें हमको इनकम टैक्स रिटर्न में एक अलग से टेबल है कॉर्पस के लिए, वेयर इट सेज यू हैव टू रिपोर्ट ओपनिंग
add receipts less whatever has been utilized out of corpus and the closing. So if you have utilized any money from corpus, then you will have to report there as paid out of corpus. So it is a one line item, or I have to explain what are the expenses I have incurred. नहीं, so typically there is a table. Now see, I'm not able to recollect exactly वहाँ पे space है कि to explain. जितना मैं समझता हूँ शायद नहीं है वहाँ पे space, but definitely वहाँ पे payment के लिए whatever you have spent out of that fund, you have to enter that figure there. Okay, or is it when we put all the expenses and then we write it the source of those expenses and then we mention the corpus amount there? Nee, didn't get it. Sorry, can you just come again? At one place, there is all the total expenses are listed. That is the total coming, and then it asks what has been the source of this expenses. It could be the current income. It could be the past Out of corpus. Yeah, sources. correct. There we can mention the corpus. Yeah. So yeah, I think you are referring to that table जहाँ पे हम expenses report करते हैं. वहाँ पे नीचे वो source भी पूछता है, right? That what is the source of this expense? Yes. If there is a row there which calls out that the source is corpus, then yes, we have to report there as well. Anybody else has any questions, any doubts? Okay. Okay, then with this, we have completed the topics for today. Like every time, we will have a short quiz with for each of the teams for 2 questions. Let's move on to the yes. Hi sir, I have one question. Yes, Rani. In our organization, we are having one long-term grant. We have received once a year for long-term grant because every year we will not get enough fund. So that's why we are using that. We have done one contract with APPI for long-term grant. If we receive once a year for this financial year, if we are not getting fully, if expenses is 1.5. So we received the fund is once a year. The 50 lakh we are using from long-term grant. How will we show in this balance sheet? You have received 1 crore, but you have spent 1.5 crores. Is this will come under corpus fund or? So you are saying that excess 50 lakhs, how will you report? Is that the question? No. In long-term grant only, how will we show? This is not our donation. Hey, see, if you have received 1 crore rupees and you have spent 1.5, that means that 50 lakhs you would have sourced from some kind of past reserves or maybe corpus, right? Yes, sir. If that is the case, then so the question is that how do you report that excess spend of 50 lakh rupees in your financial statement? Is that the question? No. My question is that long-term grant amount is there, na? So that is not our donation. Correct. So this is repurpose of every year's our expenses. Once we will get the donation, again we will give it back to that long-term grant only. Okay. So this account, how will we show in the balance sheet? This is not our donation, actual donation. Is it restricted donation? Not restricted also. So it is unrestricted donation that you have received. So if it is unrestricted donation of 1 crore, then you can. We can't say this is unrestricted or restricted because this is long-term grant means if we are not getting any funds from other donations, we will use this. Once we get the donation, again we will give back. Acha, okay. This is like how we will take the loans kind, na? Okay. So donor has given a revolving fund kind of like a fund which is to be only used if you are falling short of any funds, but then you have to reinstate back that amount. Yes, sir. Okay. See, I mean, in such case, then see, this is a very typical example of somewhere then this donation is restricted, or maybe it is a donation with some conditions attached. So, see, when you receive this donation, typically you will report it as your liability then. It should not be your income in the first place.
Hmm. when you have received this money, because there are conditions attached to this kind of donation, right? Yes, So sir. it will be a liability. Now, if you are utilizing that money in a year, it will be reported as your, expense, and you will have to transfer that fund balance to your reserve and surplus. So treatment will be somewhere similar to corpus that we just discussed here. Where you will have to transfer that fund balance to the extent that you have utilized to your reserve and surplus. And when you reinstate back that money, you will again have to transfer from your surplus generated during that year back to that revolving fund. Okay. Yeah, so if you have understood this corpus cut treatment, this accounting treatment that we just discussed, of course, we will be sharing this content as well. You can go back and look at those accounting entries again. But to answer your question, it will be treated similar to corpus. Corpus. Okay. Yes, Got Ravi. it. Thank you. I will just add that Rani, at this point, because we don't have the documentation also, no, it's difficult to conclude exactly, but the way Dohit, like the way we have understood it, what Dohit is saying makes sense. But, it is important that you understand what the documentation is. Matlab, maybe verbally this is how it is communicated to you, or we don't know. But it's important to always understand how this is documented, how the donor is documenting it, and then sort of take a call. So definitely with our understanding of, what you are saying, what Dohit is saying, it is right where it is. But if your facts are different, if your MOU, especially considering it is a donor like ABPI, I'm sure that the documentation aspect of that also will be quite different. So just make sure that that is in line with how you are understanding it to be. Okay. We'll check, sir. Thank you. Yes. Anybody else has any questions, or else we can just have a small quiz session. ओके, तो सबको आपके टीम्स याद है? टीम 1, टीम 2, टीम 3? कोई है जिसको टीम याद नहीं है? Okay, I'm assuming then everybody knows their team. So let's start with first question for team 1. Okay, so here is the question. Agreement of trial balance primarily confirms which of the following? That all transactions are correctly classified, all expenses are properly recorded, arithmetic accuracy of postings, or compliance with accounting standards. Team 1, what would be the right answer? Which option? Anyone? Okay. In the chat box, I think Ankush has mentioned C. Okay. Yes. Right answer is C. Team Guys, 1, आपको unmute and answer. unmute करके बोलना है. Yes. Okay. Yes. So मेरे को ये लगा कि टीम वन का अकेला मैं ही हूँ शायद. अच्छा, आप ही हो. Okay. Yeah. Second question for team 2. Suspense account should ideally be what of the below? Continue in balance sheet until next year, be transferred to reserve and surplus, be adjusted through income expenditure, or be closed after rectification of errors. Team 2, can anybody just unmute and... D. D. Perfect, yes. Next question for team 3. In the finalization process, surplus or deficit from income and expenditure account is transferred to which of the following? Reserve and surplus, receipts and payments, corpus, or suspense account? A. Yes, that's right. Again, back to team 1. A purchase of computer is recorded as office expense instead of fixed asset. This is an example of what kind of error of the below? Error of commission, omission, principal, or compensating error? Principal. Yes, perfect. Ankush, I am assuming you are the only one from Rani team is 1. also हाँ, in मेरे team को 1. भी ऐसे ही लग रहा है. Rani, शायद. Rajiv, Kusum, you're all team 1. Rani, Rajiv, Kusum, Ankush.
Okay. The right answer is option C, error of principle. Team 2, which account is prepared on cash basis of the below? Income and expenditure, balance sheet, receipts and payments, or general fund? Team 2. C. Sorry, can you repeat, Rashmi? C. Yeah, C. C. C, receipts and payment. That's the right answer. Last question for team 3. Which of the following is not a condition for a donation to qualify as a corpus under tax law? Okay, which of the following is not a condition for a donation to qualify as a corpus? A, specific written direction from donor, board resolution approving corpus classification, investment in section 11(5), or separate disclosure in financial statements. B. Yes, that's right. Board resolution is not mandatory under the income tax law, but all the other conditions are mandatory for a donation to be treated as corpus. Yes, perfect. So everybody has answered right, and yeah, that's all we had for session 3. I hope this topic was useful to everybody. Maybe कुछ चीजें नहीं रहेगी. I think first time अपने शायद देखा रहेगा when it comes to accounting treatment. हम usually corpus के बारे में बात करते हैं, हम reporting भी करते हैं, but from an accounting perspective, lot of times certain things are taken care by our CAs, our auditors, right? We don't really get involved in कि इसका final treatment क्या हो, कैसे उसका reporting होता हो. But we as accountants, we all need to be aware कि what is the right treatment, and what CA does is not something that that responsibility still lies with us, right, as an organization. Ki what is CA reporting in the financial statements and in the ITR that gets filed. So from that angle, I hope this session was useful in terms of understanding the topics. अगर किसी को फिर भी doubt है, I would strongly advise that you go through this content. And if you still have any questions, please feel free to post it on Discord channels. We'll be happy to clarify and answer or respond to your questions and queries if you still have any. Yeah. Once again, happy Holi, everybody. Thank you, Dohit, for taking all this effort to deliver. It's not easy, and I know that each particular batch brings with it a particular set of questions, because each non-profit in its way is unique, and how they operate and sort of run is very unique. So thank you each and every one of you, because I know especially today being Holi, it is thanks for being here. All right, see Thank you all you. next week. Next week we Yeah. will be on Wednesday, which is 11th. So next week Wednesday को ही होगा 11th of March, 2:30 p.m. We'll obviously put a message and we'll share all the recordings and everything. But see you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Happy Thank you, Holi to everyone. everyone. Thank you. Thank you, Ravi. Rohit. Thank you. Bye, friends.